I would like to welcome you all to my YouTube channel Anjanas Education. Today we are going to discuss Nightingale and The Rose, which is in the invitation to English 2 and it is for plus 2 second year art science and commerce students. So it is a unique topic we are going to discuss today. गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण बा बहुत गोटे important topic आमे आज discussion करबा ପାଇଁ जाउछु and which is written by Oscar Wilde. Oscar Fingal O Flaherty Wills Wilde, the full name of Oscar Wilde. He is better known as Oscar Wilde, जहाँ को भल भाव आम समस्त परिचित. Oscar Wilde, who was born in the year 1854 and died in the year 1900. He is a gifted poet. से होउछन गोटे gifted poet to the English literature. He has contributed a lot. English साहित्य प्रतिभा कला प्रति तांकर बहुत अवदान रही. एज अ प्ले राइट गोटे नाट्यकार भाव में नोवेलिस्ट एज आम कहीपर एज अ नोवेलिस्ट कहले औपन्यासिक एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम Ireland, and he wrote many short stories, and he especially belonged to Ireland, and he was an Irish poet. से थिले जने आयरलैंड रो कवि and writer. His stories are marked by sparkling wit, genial humor, and insight into human nature. विट कहले तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न किसी घटना वस्तु लिखिबार से पारंगम थिले. जेनियल ह्यूमर वी कैन से आमोद बा प्रमोददायक, and we can say the writing of that person and the contribution of Oscar Wilde is completely based upon human nature, genial humor and sparkling wit. तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न आमोद प्रमोददायक एवं most of the writings are based upon human nature, human characteristic and human society. मनुष्य सभ्यता को लेकर, मनुष्यर कैरेक्टर को लेकर, मनुष्यर प्रकृति को लेकर तांकर मुख्यतः लेखा पर्यवेस्त होता है. So before going to the text, I would like to discuss about the text. What is the theme in this story? ये स्टोरी रे कौन रही? The relation between a bird and a human or a person. दुई जनकर भितर गोटे संपर्क गढ़ी उठी. A new relationship is formed there between a bird and a young student who was in love with a girl. गोटे झील सहित लव रे पड़ जाइछंती गोटे young student, and how that bird, Nightingale bird, the bird name of that bird is Nightingale bird, and how she has sacrificed her life for a young student to get or to help him to get his love. So tell me, let me tell something you. So you are acquainted with fairy tales. Fairy tales कहले काल्पनिक कथा जोटा को आम जानिचे. A fairy tales usually relates a fantasy in which often animals, birds and even non-living beings speak human voice and share human joys and sorrows. Most of the animals are there, those who are domesticated by us. गृहपालित पशु विभिन्न प्रकार रही जो माने they are close to the human, they are close to the human society. से माने मनुष्य सभ्यता सहित जड़ित अछंती, and they are quite close to the human. से माने मनुष्य मानक सहित जड़ित होथांती, and they also the sorrows and joys are shared between the human and the animal. जेमती आम कोई परिबा सुआ गोटे अच्छी parrot who can speak like and who can create the voice of human. मनुष्यर सभ्यतार voice से create करि परथाय, मनुष्यर voice create करि परथाय. Similarly they also can follow the voice of the human. मनुष्यर voice को भी समान follow करि परथांती, and they also imitate the sound of human. Similarly एठी गोटे bird कथा कहै छी, how that bird was there to help the young student to get his love. तार love पाइबा पय, तार भल पाइबा पाइबा से किभଳି साहाय्य करछि से विषय रे हमें जानिबा. The story is written in the fairy tale tradition. Actually this story is written in the fairy tale tradition. बोले काल्पनिक कथा वस्तु को लेकर आधारित होइटा. In this story a nightingale is so moved by sympathy for a young student, and the nightingale bird had shown her sympathy towards the young student, and in the end we will come to know that how that young student or how that nightingale bird had sacrificed her life to give him a red rose. Completely red rose को लेकर गल्प आधारित, and it is the relation between that nightingale bird and the young student, how that young student was searching for a red rose. से गोटे गोलाप फूल पे सर्च करूला बा संधान रे थिला, because his beloved wanted that red rose by which she
could dance with him तांको सहित dance करि परिबो बोली कर से कथा कहउथले. So the nightingale is a migratory bird. At first we will come to know what kind of bird it is. The nightingale होची गोटे पक्षी जोटा होची भ्रमणशील पक्षी बा जाजावर पक्षी बोली कर कहउथवा हमें. एंड देखियो अपन ये बहुत एक्टिव था आ बहुत चलचंचल था. That is why the name of that bird is nightingale. Bird seen in Britain from April to September. April of September मासरे साधारणतः ब्रिटेन रे देखा देते. It is small brown bird famous for its enchanting sad song. And that bird is famous for enchanting sad song. दुख गीत गाइबार माहिर होता है से बर्ड से नाइटिंगेल बर्ड कहुचे. एंड द सिंबल ऑफ लव, दैट बर्ड इज सिंबल ऑफ लव. And a throw of the heart and the voice of desire. And what kind of thing we can get from that word when that word sings? जेतेबेले से पक्षीटी गीत गाए आमे कोन पाई परियो, what kind of thing or what we can acknowledged आमे or what we can be acknowledged आमे कोन साधारणतः ज्ञान आहरण करि परिबा. that the bird is made for the heart and the voice of desire. एई विषय आमे जानि परिबा. सो मुई द टेक्स्ट वर्तमान मो टेक्स्ट को आसची. as earlier I said you about the relationship between the nightingale and that young student. That nightingale bird had sacrificed her life to help the young student to get his love. बहुत प्रकार प्रचेष्टा करछि नाइटिंगेल बर्ड तार सांग बा जे यंग बॉय रो तार लव पाइबा पई. एंड किपरि से ताको सहाय्य करछि. एंड हाउ इन द एंड शी हैड sacrificed her life or sacrificed her life, that we will come to know. से विषय हम जानिबा को पाइबा. She said that she would dance with me if I brought her red roses, cried the young student, but in all my garden there is no red rose. So there was the central character in the topic. It मुख्य चरित्र होचंदी किए, the nightingale bird and the young student. But in the very beginning it is mentioned that the young student was mourning and that young student was feeling sad, दुख अनुभव करछि. and what was in his mind and what kind of thought it was there in the mind of the young student. से युवकर मनरे कौन अच्छी, that person was speaking something at that time. से समय से किसी कहबा चेष्टा करथला. से कौन कहूची, that she said that she would dance with me. Actually that young student was telling something about his beloved, तार प्रेमिका विषय रे कहूची. तार जो प्रेमिका विषय रे कहूची कौन कहूची, she said that she would dance with me. से मोस्ट dance करिवो, but one condition was there. And what was that? It was the duty of that young student that तार ड्यूटी होची कोन, if I brought her red rose, जदि मु ता पय गोटे रेड रोज आनी दिए ताले से मो सहित डांस करिवो बोली कर कहूची. बोली कर के कहूची, that young student was talking to himself. से निजे को निजे कथा होतला. cried the young student, निजे निजे कांदी कांदी कहूतला. but in all my garden there is no red rose. but unfortunately when he started searching in his garden he didn't or he was not able to find a red rose in his garden. तार प्रेमिका ताको कहिथिला ताको जदि गोलाप फूल आनी देबो ताले से ता सहित डांस करिवो. but in the end when he started searching in his garden to get a red rose he found nothing and there was no red rose in the garden रे कोनोस प्रकार रोज नथिला. and that is why the person or that young student was crying under a tree. गोटे गछ तळे बसी कर से कांदुची और तार दुख को से निजे निजको कहि होची. कोन कहि होची जे मोर प्रेमिका मते कहूची बा कहिला जे जदि मु ता पय गोटे रेड रोज आनी दिए ताले से मस्त डांस करिवो. फ्रॉम हर वी आर मूविंग द नेक्स्ट पेज. फ्रॉम हर नेस्ट in the oak tree the nightingale heard him. The nightingale bird was there on the tree in the tree and that nightingale bird was watching that young student what he was doing under the tree. से गछ तळे बसी कर से कोन करछि से देखुतले. she looked out through the leaves and wondered. से आश्चर्य हो गेला why that young student was crying. The person or that nightingale bird didn't know much about the young student but only things she noticed. से गोटे जिंस नोटिस कला कोन जे that young student was crying and he was talking to himself. से निजे निजे कथा होतला. so no red rose in my entire garden he cried again. से आउथरे कांदिया को लागिला कि that young student, no red rose in my entire garden, एते बड़ो बगीचा रे मोर गोटे भी रेड रोज नै. से कांदिला and his beautiful eyes filled with tears. तार the eyes of that young student were filled with tears. कौन है तार आखि संपूर्ण रूपे लुहरे परिपूर्ण हो जाइतला. as happiness depends on such little things. I have read all that the wise men have written and all the secrets of philosophy are mine, yet for want of a red rose is my life made wretched. We can write the meaning of wretched, miserable, असह्य बा आमे कहि परिबा very sad
बहुत दुख कर जर्जरित कर दी गोटे सामान्य रेड रोज क्या दैट यंग स्टूडेंट वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ एंड ही थॉट हिमसेल्फ एट दैट ही वाज थिंकिंग समथिंग एट दैट टाइम से कौन चिंता करूला हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन सच लिटिल थिंग्स खुशी कौन केवल से छोटिया जिनस आई हैव रेड all that the wise men have written से समस्त कथा मन पकड़ा he was thinking all those great persons words तांकर कथा को चिंता करथला तांकर लेखा को चिंता करथला and all the secrets of philosophy are mine yet for want of a red rose is my life made wretched गोटे सामान्य गछ गोटे सामान्य फूल मोर जीवन को तलितलांत कर देछि और मोर जीवन को संघर्षमय कर देछि टू फाइंड आउट ए रेड रोज नाउ इट इज और इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी मो पाई बहुत गुरुत्व बहुत काठिकर पाठ भलिया लागुछि सो हियर इज अ ट्रू लवर सेड द नाइटिंगेल बर्ड कहूछि हियर इज अ ट्रू लवर सेड द नाइटिंगेल हिज हेयर इज डार्क said the nightingale tapre nightingale was noticing at that time to that young student I told you in the trees he was there se tree gocho tole gocho bhitre thila se nightingale bird kahingi na the nest of that nightingale bird was there in the tree gocho bhitre hi tara bosa thila so she was watching the young student at that time se tanku bhalo लक्ष्य करूथला and se kon कहूथला she noticed that a true lover was there under the tree बर्तमान गछ तले बसुवा लोकटी होची बा से युवकटी होची ट्रू लवर प्रकृत भल पाइबा प्रकृत लवर बोली कर से कहूची said the nightingale her hair is dark as the night and his lips are red as the rose of his desire and now the posture of that young student is mentioned by that nightingale bird through the writer iti kon करचंती writer has explained the posture of that young student through the nightingale bird. The nightingale bird was watching. Nightingale bird तांको भलो भाବରେ देखुतला से young student को and ସେଇଠି କଥା କହିଛି his hair is dark तार चुटी पूरा कला थिला as the night and his lips are red तार ओठ पूरा कोन हे जाइतिला नाली पड़ी जाइतिला as the rose of and in desire of rose फूलोर आशारे से तार तार चुटी पूरा कला देखा जाउतला एज डार्क एज नाइट राति भली कला देखा जाउतला एवं तार ओठ कोन हे जाइतला अधिक नाली पड़ जाइतला इन डिजायर ऑफ दैट रोज बट पेशन हैज मेड हिज फेस लाइक पेल आइवरी एंड सरो इज अपॉन हिज ब्रू कहले तार भ्रूलता आमे जोटा कहबा आ प्लेल आइवरी होची दांत भली धला पेल कहले धला इट इज कंपेयर्ड विथ हस्ती दांत बोलिकर आम हाथी दांत बोलिकर कहूँ एंड सरो इज अपॉन हिज ब्रो तार आखिरे देखा जाउथला दुख कौन देखा जाउथला एंड इट दैट व्हाई ही वाज फीलिंग सैड एट दैट टाइम ओनली फॉर दैट रेड रोज कहीं ना रेड रोज आनले तार लवर ता सहित डांस करिवो यंग स्टूडेंट सहित बोलिकर से ही वाज सर्चिंग फॉर दैट रेड रोज बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ रेड रोज देयर इन द गार्डन रे कौन प्रकार गछ फूल से पाई पारला नाही एंड हु वाज वाचिंग दैट यंग स्टूडेंट दैट नाइटिंगेल बर्ड सी नाइटिंगेल बर्ड ताको भल भाव देखुला गछ रे द प्रिंस गिव्स अ बॉल टुमोरो नाइट murmured the young student and my love will be there if I bring her a red rose she will dance with me if I bring her a red rose I shall hold her in my arms and she will lean her head upon my shoulder and her hand will be clasped in mine but there is no red rose in my garden so I shall sit lonely and she will pass me by she will dance only with others and my heart will break so some thoughts and different kind of thoughts in the mind of the young student I told you he was in love with a girl and to dance with the girl he wanted to get a red rose on behalf of his love and to get his love तार भल पाइबा तार प्रेमिका सहित नाचवाई से कौन करूला से गोटे डिमांड करूला गोटे रेड रोज तार प्रेमिका एंड विच वाज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क ऑन द पार्ट ऑफ दैट यंग स्टूडेंट टू गेट दैट रेड रोज ता पक्षर बहुत कठिकर पाठ हो जाइए पाइबा गोटे रेड रोज सो दैट इज वाई सम थॉट्स इट केम इन टू हिज माइंड माइंड यंग स्टूडेंट माइंड रे किसी थॉट आसी से कौन कहूँ द प्रिंस गिव्स ए बॉल टुमोरो नाइट प्रिंस आसो गोटे बॉल दबो टुमोरो नाइट मर्मर द यंग स्टूडेंट से धीरे धीरे कथा स्टार्ट करूला एंड माई लव विल बी देयर इफ आई किंतु हाउ कैन आई गेट माई लव मु केतबेले मोर भल पाइबा पाई पारिबी मोर प्रेम मु केतबेले पाई पारिबी इफ आई ब्रिंग हर ए रेड रोज अदरवाइज द प्रिंस विल कम एंड ही विल टेक हर से ताकू नहीं जीवो से ता सहित डांस करिवो एंड आई विल
disappoint myself, I will be disappointed myself, mu durbhagya feel karibi, and whatever it may be, I will have to get a red rose and I will have to find out a red rose to get my love, more bhal paiba pai mate jemti hele bi at any cost, at any circumstance, I will have to get a red rose. And tapre kichi thought asi kichi, and now the person, that young student, was imagining a lot. Se bahut jinso bartman parikalpana korchi kono, if I bring her a red rose, जदि मु ता ପାଇଁ ଗୋଟେ red rose ଆଣି ଦିଏ, I can dance and I will dance with the dance with me, she will dance with me till dawn, पूरा ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ. If I bring her a red rose, I shall hold her in my arms, and if I get her a red rose, ଯଦି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ red rose ଆଣିଦିଏ, I shall hold her in my arms, ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବି and ସେ ମୋର ବାହୁରେ ରହିବ. And she will lean her head upon my shoulder, से कौन करिवो, लीन करिवो बोले से तार मुह बा तार फेस को मो पाखे रखिवो on my open my shoulders, and her hand will be clasped. We can write the meaning of clasp. Clasp कहले हग बा आलिंगन, लीन कहले झुंकेइबा, मुंडो झुंकेइबा. So that means the relationship will be formed there if I get a red rose for the girl. जदि से झियो पाई मु आनी दिए red rose, ताहले से आसी कौन करिवो मते आम से मो सहित डांस कर, से मो सहित आलिंगन कर कथा कही. एंड हर हैंड विल बी क्लास्प्ड इन माइन, से कौन कर तार हाथ सहित मते आलिंगन कर, एंड इट विल बी अ होली रिलेशनशिप विच विल बी स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग अ रेड रोज. बट इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ दैट यंग स्टूडेंट. किंतु बर्तमान यह कष्ट जना पड़ी कहीं ही वाज नॉट एबल टू फाइंड अ रेड रोज देयर इन हिज एंटायर गार्डन. तार गार्डन से पाई पारे नहीं गछ फूल, से से बहुत दुखित अच्छी, एंड ही वाज फीलिंग सरो एट दैट टाइम. बट देयर इज नो रेड रोज इन माय गार्डन. ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही थॉट अबाउट द रेड रोज, बट ही वाज इमेजिनिंग ए लॉट बिफोर दैट. आ पूर्व टिके से कौन करथला, चिंता करथला जदि से रेड रोज आसे से तार प्रेमिका सहित डांस कर पारिबो टिल द डन, पाहांतिया पर्यंत बा से काळा पर्यंत. एंड हर हैंड विल बी क्लास्प्ड इन माइन, तार हाथ सहित मध्यम मत से आलिंगन कर. एंड सी विल लीन हर हेड ओपन माय शोल्डर, से कौन कर मो उपरे मुह रखिक मुह रखिपार एक कथा कहते. बट देयर इज नो रेड रोज इन माय गार्डन. एंड व्हेन ही थॉट अबाउट द रेड रोज, ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही स्टार्टेड फीलिंग सरो. दुख परिमाण बढ़ी बढ़ी जाऊला ड्यू टू दैट रेड रोज. सो आई शैल सिट लोनली. जदि मु पाइबी नहीं रेड रोज, आई विल हाव टू सिट लोनली, मत एकुटिया बसवाक पड़ो. एंड सी विल पास मी बाय, मत से क्रॉस कर जाऊब. एंड सी विल नेवर लुक एट मी बिकॉज आई डोंट हाव रेड रोज. जदि मो पाखे रेड रोज न थाए, सी विल डांस ओनली विथ अदर्स नॉट विथ मी. से मो सहित डांस करिवो नाही, अन्य सहित डांस करिवो. एंड सी विल नॉट लुक एट मी, एंड माय हार्ट विल ब्रेक. एंड आफ्टर दैट माय हार्ट विल बी कम्प्लीटली ब्रोकन, एंड माय हार्ट विल ब्रेक. मोर हृदय भांगी जीव. When the young student thought about the girl, that if I am not able to give her a red rose, then she will dance with others, she will never look at me, and she will pass by. मत क्रॉस कर अन्य सहित डांस कर, एंड सी विल नेवर आस्क एनीथिंग टू मी. एंड से मो सहित डांस कर, अन्य सहित डांस कर, एभली भाव से दुख फील करथिला किए दैट यंग स्टूडेंट. Night after night, how I sung of love, thought the nightingale, and what I sing of he suffers. What is joy to me, to him is pain. Surely love is wonderful thing, it is more precious than emeralds, and dearer than fine opals. Pearls and pomegranates cannot buy it, nor is it for sale in the marketplace. It may not be purchased from the merchants, nor can it be waged out in exchange for gold. So it is heart touching lines. It will, I surely can say that we must go through this, and it is very essential lines mentioned by the writer. It might come in your exam, that is what I am telling you. So night after night have I sung of love, thought the nightingale, and what I sing of he suffers. So the nightingale bird didn't know much about love and the feelings of a young student, but when that nightingale bird started noticing that young student, it was too difficult task to tolerate the patience of that young student. Tara dukho rasima nothila, and she thought, and she started imagining herself what she sung of he suffers. Se juta gauchi tar kono
हेटा सतरे and see the young student was really suffering. Yes, he was suffering. And then the nightingale bird thought to herself, निजे चिंता कला, what is joy to me? Actually she used to sing sad songs, and for her joy and for the joy of human she was singing that song, and she sings that song, she say gito gaye. But in real, when she started noticing that young student, she came to know, se jete young student को देखिला, से फील कला व्हाट इज जॉय टू मी टू हिम इज पेन, जोटा मते खुशी दउची, लोक खुशी दउची, बट दैट यंग स्टूडेंट वाज फीलिंग पेन, ही वाज सफरिंग पेन, से बर्तमान जंत्रणार जर्जरित होइतिला फॉर दैट लव एंड फॉर हिज लव एंड फॉर द रेड रोज. So surely love is a wonderful thing. Now she started imagining about love, an emotion which is found by human. मनुष्य ठारू आरंभ होइतिबा ई जो भल पाइबा जिनसोटी से विषय से धारणा तार आने जानला. बट बिफोर दैट सी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया रिगार्डिंग दैट लव. ता पूर्व ता विषय से किछि धारणा नथिला. एंड नाउ the nightingale bird was comparing that love with other elements through the writer had shared the experience, and the writer had said something through the nightingale bird to the reader's experience. The it is more precious, बहुत मूल्यवान. the love is more precious than emeralds कहले मणि ठारू भी बहुत मूल्यवान. and dearer than fine opals, नेलिया पत्थर गोटे चकपक करुवा पत्थर ठारू से आहरी अधिका उज्जवल. pearls and pomegranates cannot buy it. कौन प्रकार जिनस डालिंब को किणला भली ताकू love cannot be bought. ये गोटे जिनस, it is such kind of emotion which cannot be bought, जाको किणा जाई परिबो नै, and it cannot be sold, आको बिका भी जाई परिबो नै, and it is not available in the marketplace. कौन मार्केट मॉल रे एट अवेलेबल न थाए. it is such kind of thing, it is very unique thing, and it is a unique emotion which is found in human nature. मनुष्य सभ्यता एटा पाइबा को मिली थाए, and they people to struggle a lot to get their love. समस्ते जो माने भी मनुष्य सभ्यतार अच्छा से माने लव पाइबा बहुत उत्सुकतार सह अपेक्षा करथांती, एंड दे स्ट्रगल ए लॉट फॉर दैट. इट मे नॉट बी परचेज्ड फ्रॉम द मर्चेंट्स. एटा कोनोसी दुकानी ठारू कोनोसी बिकाली ठारू किणा जाई परिबो नाही. नॉर इट कैन बी वेस्ड आउट इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड्स. आ गोल्ड बदल रे लव को पाई हबो नाही बोली करी द पर्सन के दैट नाइटिंगेल बर्ड वाज इमेजिनिंग हरसेल्फ, एंड राइटर हैज शेयर्ड हिज words with the readers through that nightingale bird, who was noticing from the beginning to that young student in the tree. से गछ पाखर रही के से संपूर्ण भाव से young student को फॉलो करतला, and in the end she came to know and she understood the sorrow of that young student. Why the young student was crying, से कौन पाई दुख अनुभव करतला कांदतला कौन पाई से विषय जानिबा पाइला कि that nightingale bird. In the next paragraph we are moving. I am not going to take so much of time actually. So the musicians will play open their stringed instruments. I told you the experience of that nightingale bird and what she felt. से कौन अनुभव करतला for that young student से विषय को होची. The musicians will play open their stringed instruments. Musician माने कौन करिवे, गीत गाइबे with their decoration, with the help of their instruments. तांकर बहुत इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सजे कर से माने गीत गाइबे बा गीत ये करिवे. said the young student, माने the young student was imagining a lot about that love and his beloved, तार प्रेमिका विषय से भावुतला. and the musicians who must be present there, जोठी म्यूजिशियन माने थिबे भायोलिन बजेवा पई विभिन्न प्रकार इंस्ट्रूमेंट बजेवा पई तांको विषय कहिचंती. दैट यंग स्टूडेंट सेड द यंग स्टूडेंट एंड माय लव विल डांस टू द साउंड ऑफ द हार्प. HARP, हार्प कहले म्यूजिक बा इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग कहले सजई करी बजेवा जोटा हमें कहूँ. So she will dance so lightly that her feet will not touch to the floor. So the young student has said something about his love, how she could dance and how she would dance with the music. से म्यूजिक सहित से किभली डांस करियो से विषय कही दैट यंग स्टूडेंट. दैट माने the musician must be there and they will start playing their music with all the instruments. से माने तांकर गीत बजेबे with their instruments. They will decorate it properly. कौन पे डेकोरेट करिवे, by which others and the audiences will dance there, and my love will be there to dance with the sound. से sound से तो से भी dance करतुबो. हार्प कहले म्यूजिक, वायोलिन कहले काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. वी नो दैट सी विल डांस सो लाइटली, से धीरे धीरे डांस करवा स्टार्ट करिवो. दैट हर फीट विल नॉट टच टू द फ्लोर, जमा चट्टान रे तार गोड़ बाजिबो नाही. एंड द कॉर्टियर इन देयर
गे ड्रेसेस बोले गे कहले बहुत आम कहीपर फ्रेश ड्रेसेस बा सुंदर ड्रेस चाकचक्य होकर से कर्टियर्स कहले अन्य पार्षद जो मैंने अदर dancers must be there to cooperate the others बा ऑडियंस समस्त को सहयोग करने अन्य कर्टियर्स मान भी सेठी थिबे इन देयर गे ड्रेसेस विल थ्रोन राउंड हर एंड द कर्टियर्स विल बी सराउंडेड बाय माय लव मोर लव पाखर बा मोर प्रेमिका पाखर समस्त चारिआडे घेरिक थे विथ न्यू ड्रेसेस विथ डिफरेंट ड्रेसेस विभिन्न प्रकार ड्रेस पिंधिक से थे बट विथ मी सी विल नॉट डांस एंड व्हाट इज द सैड एंड व्हाट इज द सोरो एंड व्हाट दैट why that the young student was crying कौन पाई से young student कांदुला मन पकाउला कौन कहूला जे समस्ते थे बट द पर्सन किए द लव एंड his lover will not dance with the young student that is why he was crying and he was feeling sad से दुख अनुभव करूला जैसे कांदिबो आउ ता सहित कहीं डांस करू ना बोलिक किए तार लव बा तार प्रेमिका ता सहित डांस करू ना आई हैव नो रेड रोज टू गिव हर एंड व्हाई सी विल नॉट डांस विथ मी बिकज आई हैव नो रेड रोज टू गिव हर मो पाखे रेड रोज ना ताकू देवाई जेहेतु से मो सहित डांस कर ना सो इट वाज द पॉइंट एट एनी कॉस्ट ही हैड टू गेट अ रेड रोज बट it was too difficult as to get that red rose kahinki it was not there in his entire garden tar garden रे से पाइला नहीं अब तापर से इमेजिन करूची everyone will be there but I cannot dance with that love मु मोर प्रेमिका सहित डांस कर पार नथिबी काहेकि ड्यू टू दैट रेड रोज आई डोंट हैव रेड रोज आई कैनॉट डांस मो पाखे रेड रोज नहीं मु ता सहित डांस करिबे नहीं एंड आफ्टर दैट रेड रोज टू गिव हर एंड फ्लॉन्ग हिमसेल्फ डाउन ऑन द ग्रास तापर से निजको फोपाड़ी देव से तले फोपाड़ी देछि किए एंड ही वाज थ्रोन हिमसेल्फ ऑन द ग्रास से भूमि रे पड़ी जाइछि बा से तले से पड़ी जाइछि एंड ब्यूड हिज फेस तार फेस को से हाइड कर देछि ब्यूड बोल गेले हाइड कर दबा एठी ब्यूड हिज फेस इन हिज हैंड्स हाथ माध्यम रे तार फेस को लुचे देछि काहेकि द पर्सन दैट यंग स्टूडेंट वाज डिसेबल्ड टू गिव दैट रेड रोज टू द गर्ल से झील को से पाखे रेड रोज नाला एंड एट दैट टाइम द पर्सन यंग स्टूडेंट वाज इमेजिनिंग ए लॉट अबाउट हिज लव जी डांस करूथो बट एलोन से एकुटिया डांस करूथो किए तार लव बा तार प्रेमिका एंड यंग स्टूडेंट मस्ट बी वाचिंग दैट से देखुथिबो बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग विथ द गर्ल से किछि करि पार नथिबो ता सहित डांस भी करि पार नथिबो एंड ओनली थिंग ही विल बी डूइंग एंड व्हाट वाज दैट ही विल बी क्राइंग कहीं पाखे रेड रोज ना बोलिक से कांदुव जहाद्वारा से तार सहित टाइम स्पेंड कर एक कथा कहुई सो हिमसेल्फ डाउन ऑन द ग्रास हिज फेस इनसाइड आम कहीपर इन द नेक्स्ट लाइन इट इज मेंशन्ड हियर सो देन द यंग स्टूडेंट विल हाइड हिज फेस इन हिज हैंड तार हाथ माध्यम से तार फेस को लुचेब एंड ही विल बी थ्रोन ऑन द ग्रास हिमसेल्फ निजे निजे कौन हम से फिंगिदेव निज थ्रो करदेव कौटी ग्रास मध्य को आम कह तले पड़ज एंड कहीं ही विल फील इनसल्टेड एट दैट टाइम से टाइम से कौन कर अपमान फील कर कहीं ड्यू टू दैट रेड रोज ता पाखे रेड रोज ना बोली एंड इन हिज हैंड्स एंड वेप्ट एंड ही विल स्टार्ट क्राइंग आफ्टर दैट तापर से कांदिवा स्टार्ट कर कहीं ही विल नॉट बी एबल टू स्पेंड वैल्यूएबल टाइम विथ हिज गर्ल और विथ हिज लव तार प्रेमिका सहित से तार टाइम स्पेंड कर सो इन द नेक्स्ट लाइन व्हाई ही इज वाइपिंग आस्क्ड अ लिटिल ग्रीन लिजर्ड एंड ही मस्ट बी थिंकिंग तापर कौन है हठात व्हेन दैट यंग स्टूडेंट वाज क्राइंग आफ्टर थिंकिंग ऑल दोज थिंग्स ये सब जिन भाविबा परे एंड आफ्टर बीइंग इमेजिन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिज लव एट दैट टाइम ए ग्रीन लेजर्ड वाज पासिंग बाय गोटे ग्रीन लेजर्ड कौन करता से आड़ देखिए जाऊला झिटिपिटी गोटे एज ही रैन पास्ट हिम विथ हिज टेल ही सेड व्हाई ही इज वीपिंग से कौन पाई कांदुची बोलिकर से पचारला व्हाई एंडेड वास्तव सतरे कौन से कांदुची सेड बटरफ्लाई प्रजापति गोटे उड़ूला हु वाज फ्लटरिंग अबाउट आफ्टर ए सन बीम गोटे सूर्य किरण पछरे से दौड़ूला बा उड़ी बुलूला से टाइम रे व्हाई एंडेड सतरे वास्तव में कौन पाई से कांदुची बोलिकर पचारला कि प्रजापति ही इज वीपिंग फॉर अ रेड रोज सेड द नाइटिंगेल बर्ड वाज वाचिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एज आई टोल्ड यू पूर्व मुझे कहूँ नाइटिंगेल बर्ड से यंग स्टूडेंट को भल भाव में वाच करूला फ्रॉम द ट्री
and she replied to the butterfly and the green lizard why that young student was crying. से कौन पाई से young student टी कांदुतला से विषय से green lizard को butterfly को कहला that for a red rose से कहला गोटे गोलाप फूल नाली कलर गोलाप फूल पाई से कांदुची बोलकर कहला. then they cried. How very ridiculous. से माने they were not serious about the topic, they were not serious about the red rose, and they didn't have much idea about love, and they didn't have any kind of emotion because they were birds only. ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ animal ଥିଲେ, and they didn't have any kind of emotion and idea about human nature and human characteristics. ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିଲା, and that is why they said it is very ridiculous. ବିରକ୍ତିକର ଥଟାଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ କହିଲେ because they didn't like why he was crying. ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ ନାହିଁ why that young student was crying, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା. But the nightingale understood the secret of the student's sorrow. Only person was watching from the beginning, that was the nightingale bird, and she came to know the sorrow and why that young student was feeling sad. से ही भल भाव बुझीला से नाइटिंगेल बर्ड जे प्रथम ताकू फॉलो करथुला यंग स्टूडेंट को प्रथम जे ताकू वॉच करथुला फ्रॉम द ट्री, एंड सी न्यू द सीक्रेट ऑफ लव. से ही जानी लव र सीक्रेट, एंड सी सैट साइलेंट इन द ओक ट्री पाखे से साइलेंटली बसिला एंड थॉट अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लव. एंड सी that nightingale bird started analyzing the love, the emotion which is formed in the human nature, जोटा मनुष्य सभ्यतार देखा देछि से ताकू व्याख्या करबा को लागिला. एंड सी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मिस्ट्री ऑफ लव, लव रहस्य विषय जानिया पई चाहिला. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास that whether that nightingale bird helped that young student to get his love or that red rose. Thank you for